Hello friends, here I am with new video, electric current. What is electric current? Let's see through this video what is electric current. जैसा आप ये जानते होंगे आपने पानी का फ्लो देखा होगा. You have seen the flow of water. You sometimes refer to as or many times you refer to as current of water. So you are getting the sense. आपको पता चल रहा होगा कि current कुछ है, मतलब यहाँ कुछ flow हो रहा है. There is something flowing. So in this electric current, what is flowing? It is the amount of charge flowing through a particular area in unit time denotes electric current. In other words, it is the rate of flow of electric current charges. मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो फ्लो हो रहा है एक पार्टिकुलर एरिया के थ्रू. सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और इसमें आपको सर्किट बता दूँ, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक सर्किट. जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक क्लोज पाथ होता है. इसमें कुछ डिवाइसेस लगे रहते हैं, वायर होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होता है जब ये सर्किट क्लोज होता है. आपने घर में भी देखा होगा, अगर आपने कोई वायर कट कर दी वहाँ से, फिर इसको जॉइंट नहीं किया तो वो इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं करता है. इन सर्किट ऑफ मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज. और ये जो सर्किट होते हैं इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में. सो बट कन्वेंसली क्या होता था कि पहले इलेक्ट्रॉन वाज नॉट नोन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शंस हैं उसको जो है सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शंस फॉलो किया जा रहा है, जो कि आज भी चल रहा है. नाउ वी सी दैट through help of a diagram about the circuit. Here I am drawing it for you. ये रहा एक लैम्प, हमने इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है. मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, बट आप आई होप गेन कर पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ. This is the drawing. Here, this is the key. If there is dot inside it, then it must be understood that it is in the closed position. Means जो switch है वो हमने on कर रखा है. Simple words में कहें ये होती है. This is the positive and negative terminal of a cell. So it is moving from the positive side relative. Yes, देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरह से मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट. बट in true sense, this is the negative charge that is moving anti-clockwise. There is no any positive charge that is moving, but it is due to convention that we are treating the positive direction from the positive terminal. Electric current is charged from the particular area. मैं आपको रिपीट कर दूँ सो दैट कि आप हमेशा याद रखें. एक यूनिट टाइम में जो है चार्ज फ्लो हो रहा है पार्टिकुलर एरिया से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ये हमारा एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, and it is moving in t seconds. Q charge is moving in t seconds.
So Q will be T into I. Here Q is charge and I is current. I electric current is equal to Q by T, that is the total charges moving in time T. मैंने आपको सर्किट के बारे में बता दिया. It is a continuous and closed path. It calls electric circuit. Now come to the next topic, that is when a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q divided by T. It is a very important formula in terms of electric current. ये आपको जो कभी भी आएगा और पूछा जा सकता है. ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? इट इज़ कॉल्ड कूलम. ए कूलम ऑफ चार्ज इज कंटेंट इन अप्रॉक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. नंबर्स अगर देखें तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो एक कूलम चार्ज के बराबर होंगे. इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम. तो आप इसको डिवाइड कर दें 6 × 10⁻18, देन सी व्हाट फिगर इट विल कम. It will come approximately 1 coulomb. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर कहते हैं. 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q by T. हमने फॉर्मूला देखा था. Q इज 1 coulomb फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर. जो एवरेज लाइटिंग होता है उसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर होता है. वेरी ड्रामेटिक अमाउंट है ये लाइटनिंग. जबकि हमारे नर्व्स में इट इज़ very little electric current, which is in microamperes. करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं और जो डिवाइस दैट इज यूज फॉर मेजरिंग दिस करंट इज कॉल्ड एमीटर. और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एमीटर सर्किट में कैसे प्लेस करते हैं. एमीटर सर्किट में हमेशा इंसुलेटिस की को हम ओपन मोड में रखते हैं. इट इज इन क्लोज मोड, मतलब हमने ऑन की पोजीशन में रखा है. क्वेश्चन देख लेते हैं. ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस दैट फ्लो थ्रू द सर्किट. क्या चार्जेस होंगे? Here I is equal to 0.5 ampere, T is equal to 10 minute is equal to 600 second. So it is very simple. Q is equal to IT 1 into 600 second. 1 ampere in 10 minutes. यहाँ आप देख रहे हैं T is equal to 600 second. Then Q is equal to IT. It is around 600 coulomb. Now the next topic is electric potential and potential difference. ये कंडक्टर में चार्जेस कैसे फ्लो करता है आप देखेंगे. चार्जेस फ्लो इन द कंडक्टर इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक प्रेशर? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर. अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा देन नो चार्ज विल मूव. This difference of potential may be produced by a battery made of one or more electric cells. The electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current may be defined as the work done to move a unit charge from one point to the other. अगर किसी एक चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराते हैं, ये ड्राइविंग फोर्स होता है, उसको कुछ वर्क करना पड़ता है. तो वर्क हियर वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन किया गया, दैट इज वोल्ट, एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स यूनिट एसआई यूनिट इज वोल्ट. ये जो वोल्ट टर्म आया है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन इटालियन फिजिसिस्ट, दैट इज Alessandro Volta. Alessandro Volta.
So 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. So what will it is 1 volt is equal to 1 joule coulomb minus 1. You will get a number. You must calculate this number before I give you the solution. Work done is equal to volt into charge. That is 15 watt into 15 volt into 3 coulomb, that is 45 watt or 45 joule. What is unit of power? Joule is the power. Unit of work done or energy. Let's see circuit diagram. Electric circuit comprises a battery or cell, electric components, key and connecting wires. It is always helpful to draw a schematic diagram representing different components of the circuit using a specific symbols. हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सर्किट डायग्राम जिसको भी बोला जाता है, सो दैट कि आप इसको विजुअली देख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक सेल को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट किए, प्लस माइनस. बैटरी सेल्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. एक बड़ी लाइन होती है, उसके आगे एक छोटी लाइन होती है जिसमें गैप होते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. प्लग की और स्विच, इसको घर में भी आप देखते हैं ऑन ऑफ का स्विच, फैन और लाइट को जलाने के लिए आप यूज़ करते हैं. तो जब ये ओपन मोड में रहेगा तो ये एक ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट की तरह रहेगा. क्लोज पोजिशन मीन्स इट इज पोजिशन ऑफ ऑन. इसने बीच में डॉट डाल दिया ओपन पोजिशन में, देन इट इज क्लोज पोजिशन सर्किट एलिमेंट. वायर जॉइंट को इस तरह से दिखाते हैं. और जो वायर क्रॉसिंग है वहाँ पे ज्वाइंट नहीं हुआ, बट वायर मेरली क्रॉस किया है. ये देखिए, इसको हमने ज्वाइंट में दिखा है और सेमी सर्कल बना दिया. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वायर ज्वाइंट बट वायर क्रॉसिंग. इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने एंड जैसा एक सिंबल है इससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके अंदर एक एक्चुअल डायग्राम का भी यूज करते हैं सर्किट डायग्राम में. Resistor is a zigzag diagram. वेरिएबल रेजिस्टर, या जिसको रियोस्टैट बोलते हैं. ये रियोस्टैट आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं रियोस्टैट को शो करने के लिए, और उसके अगेंस्ट में एक इस तरह का एरो ड्रॉ करते हैं, या दूसरा इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये बन गया, और यहाँ पे ये चेंज होता है इसका रेजिस्टेंस रियोस्टैट. एमीटर को आपको मैंने पहले भी बताया था. एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर ए लिखते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है. पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा ज्वाइन करता है पॉजिटिव ऑफ बैटरी,
और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव ऑफ बैटरी को ज्वाइन करता है। वोल्ट मीटर is represented by symbol V inside a circle. It has two terminals, positive and negative terminals. मैं आपको एक सर्किट डायग्राम का एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ। सर्किट डायग्राम में ये रेजिस्टेंस लगा दी। इसके बाद ये मीटर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। यहाँ पर एक की है क्लोज पोजीशन में, दैट इज ऑन पोजीशन। और ये हमने ये डायग्राम को एक सर्किट डायग्राम बना दिया विथ यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इस फिगर में आप देखेंगे वोल्ट मीटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये पैरेलली कनेक्ट होता है। पैरेलली कनेक्ट मीन्स इनका जो स्टार्ट पोजीशन है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का और वोल्ट मीटर का दोनों सेम होता है और एंड दोनों को ज्वाइंट होता है। वोल्ट मीटर एंड द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एंड फॉर एमीटर इट इज इन सीरीज, दैट इज एंड ऑफ one wire Ohm's law. Ohm's law is very important in electric current because it gives you some relationship between two different quantities. Ohm's law establishes the relationship between the potential difference across a conductor and current passing through it. जब एक ग्राफ प्लॉट किया गया डिफरेंट वैल्यू ऑफ करेंट्स को एंड पोटेंशियल डिफरेंस का एक कंडक्टर के अक्रॉस, तो देखिए किस तरह का ग्राफ बना। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ये हम वाई एक्सिस को बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस इज डिनोटिंग वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द एक्स एक्सिस इज giving the reading of electric current. So for a particular voltage across the conductor, there is different value of current, and when we are increasing the voltage, electric current across the conductor is also increasing. So there is a linear relationship between the potential difference and electric current flowing through the conductor. स्लोप ड्रॉ करना। स्लोप इज y टू x, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। सो स्लोप इज इक्वल टू v बाई i। सो v डिवाइडेड बाई i इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द ओम्स लॉ। Ohm's law suggests that there is a linear relationship between potential difference and electric current. Mathematically, potential difference is proportional to current, and V by I is equal to constant or V is equal to I. Whereas R is a constant for the specific metric wire at a given temperature is called resistance. In other words, it is a property of a conductor to resist the flow of charges passing through it. According to Ohm's law, R is equal to V by I. S time it is Ohm, and this is represented by this symbol. Okay. तो हम ओम्स लॉ देख रहे हैं।
कंडक्टर के द्वारा स्पेसिफिक होता है। तो अगर आप कंडक्टर चेंज करें तो इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, डिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट और द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक खास टेम्परेचर पे भी सेम होता है। 1 ohm is defined by 1 volt divided by 1 voltage. Rheostat is used to change the resistance. अगर वोल्टेज हम सेम रखे हुए हैं दो पॉइंट के बीच में और हमें उसमें रेजिस्टेंस चेंज करना है तो हम रियोस्टैट का यूज़ करते हैं। रियोस्टैट से रेजिस्टेंस चेंज होगा सो दैट फ्लो ऑफ करंट भी चेंज हो जाएगा। आप रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टेंस देख रहे हैं। So what are the factors affecting resistance? It is observed that increasing length of wire increases resistance. That is, R is proportional to length of the wire. अगर हम किसी वायर को elongate करेंगे then resistance will increase. Increase in thickness of wire decreases resistance. अगर हम diameter increase करेंगे वायर का तो हमारा resistance decrease होगा. Different materials for different resistance for same length of thickness. अगर same length or thickness होगा तो different materials for different resistance. So here the term rho is involved. Rho is the constant of proportionality and is called resistivity of the material. SI unit is ohm meter. So this rho is different for different metals and alloys. Resistance is also dependent on a factor that is temperature. ये हम sometimes भूल जाते हैं या हमारे दिमाग में नहीं रहता है जब हम रेजिस्टेंस के फैक्टर्स देखते हैं। तो इसे भी आपको दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर। हम जितने फार्मूले देख रहे हैं R इक्वल टू रो L बाई A और ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, we are assuming these equations for a constant temperature. For a fixed temperature, this formula will hold. No, not hold. It will hold for all different temperatures, but the value will change. Resistance will change and resistivity will change. When we're dealing with the problems of resistor. Metals and alloys shows very low resistivity. Insulators has fairly high resistivity, as shown by glass and rubber. Glass and rubber में resistance ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि आप पहले सोचिए फिर मैं बताता हूँ। Glass and rubber have जो bound electrons है, free electrons है, that is not bound, वो बहुत ही कम है। और आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज कम होंगे तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस आपने 2 पॉइंट में अप्लाई किया भी है बट चार्जेस कम है तो कम चार्ज फ्लो होगा। सो इट इज द इट मे आल्सो बी कॉल्ड दैट दिस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस। Alloys are used in heating elements. Why? हम alloy को heating element में यूज करते हैं जैसे कि नाइक्रोम। नाइक्रोम इज एन alloy। एक alloy है metals का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। High resistance and high melting point.
जल्दी गलता नहीं है, ये गलता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। अगर ये लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये फिर मेल्ट कर जाएगा। सो यू कैन नॉट यूज हीटिंग एलिमेंट्स। क्वेश्चन, an electric bulb draw current from 200 an electric bulb draw current from 220 volt source, resistance of bulb's filament is 110 ohm, how much current is flowing in the circuit? कैसे निकालेंगे यार? V is equal to IR, here V is 220 volt and R is 110 volt, that is 120 volt divided by 110 ohm is the current, it comes to 2 ampere। इसका जवाब होगा 2 ampere। metal wire is showing resistance of 26 ohm at 20 degree C। 26 डिग्री सी पे 20 डिग्री सी पे 26 ओम रेजिस्टेंस है। अगर इसका डायमीटर 0.3 mm है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर एट दैट टेम्परेचर? इस टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? और आपको मटेरियल को प्रेडिक्ट करना है कि किस मटेरियल का ये वायर बना हुआ है। आपको अभी हमने एक फॉर्मूला दिखाया था, R इज इक्वल टू रो इंटू L डिवाइडेड बाई A। हियर एरिया डायमीटर से निकल रहा है, डायमीटर 3 × 10⁻⁴ m, L इज 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, और ये आपके पास फॉर्मूला है। -6 ohm into 10 to the power -m divided by 1 meter is equal to 1.84 into 10 to the power -6 ohm। ये आपको बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में कुछ गलती मिलेगी, आप देख के बताना। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज, ये वैल्यू मैंगनीज की रेजिस्टिविटी है। हम देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स को जब डिफरेंट तरीके से ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है। दो वे से इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक लेफ्ट हैंड साइड में इमेज देख रहे हैं और एक राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में इमेज है, इसमें एंड टू एंड करते हैं 2 पॉइंट के बीच में, और जो राइट हैंड साइड में है उसमें कॉमन पॉइंट रखते हैं। रेजिस्टर्स इन सीरीज, current remains same across the resistors in series, voltage are different across different resistors। ये दो बातें आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इन्हीं दो बातों से हम जो है इक्वेशन डिराइव करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स का। जैसा कि आपने देखा ये सारे वोल्टेजेस हमें जोड़ देने हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सो दैट IRS इज इक्वल टू R1 पर IR2 प्लस IR3।
An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance and a 6 volt बैटरी। हमारे पास एक 2 ओम का लैंप है, एक कंडक्टर है 4 ओम का और 6 वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। आपको क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, और यू कैन से दैट व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम ये दोनों रेजिस्टेंस वाले एलिमेंट को हटा देते तो उसकी जगह एक अगर लगाना हो तो कितने रेजिस्टेंस का एलिमेंट लगेगा। दूसरा सवाल, द करंट थ्रू द सर्किट के थ्रू क्या करंट होगा। और द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। सो अब हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। RS equal to R1 plus R2. So total resistance is 20 ohm plus 4 ohm, that is 24 ohm. ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया और वोल्टेज अप्लाइड इज 6 वोल्ट। सो I is equal to V divided by R, voltage divided by R, or voltage applied is 6V divided by 24, that is 1 by 4 is equal to 0.25 ampere. ये हमने ओम्स लॉ से निकाल दिया। V1 is equal to IR1। V1 निकालना है, which is to be solved। So 20 ohm into 0.25 ampere comes to 5 volt। 5 volt is the potential difference across 20 ohm electric lamp। V2 is equal to 4 ohm into 0.25 ampere, it comes to 1 volt। चलो resistors in parallel. In parallel arrangement of resistors, it is observed that total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination. It means if there are three different branches, then the total current passing through these three branches will be equal to I, and the different branches, if it is I1, I2 and I3, then it will be I is equal to I1, I2. So after combining the equations, the final figure will be 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Where Rp is the equivalent resistance of the parallel combination of resistors. तो आप देख रहे हैं हमने कैसे इसको डिराइव किया है।
I total volt डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, I1 जो ब्रांच होगी उसमें V डिवाइडेड बाय R1 होगा, I2 में V डिवाइडेड बाय R2 एंड I3 में जो ब्रांच में जो करंट होगा V डिवाइडेड बाय R3 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस थ्री रेजिस्टर्स आर सेम। सो हम इन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके इस फॉर्मूले तक अराइव किए। इस पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन ए सर्किट डायग्राम, suppose the resistors R1, R2 and R3 have the value of 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm respectively. Which have been connected in parallel to a battery source. Voltage is 12 volt. Now calculate the current through each resistors B, the total circuit resistance, that is equivalent resistance Rp, let's see the answer. We can represent this question with this circuit diagram. Here it is second resistor and now the third resistor connected in a parallel connections. This is supplied by sources battery. Now battery is a combination of cells. Here switch is in open, or you can say in closed state, and if a switch is in closed state it means current is passing through the circuit, but it is an on state. करंट मूव कर रहा है। 5 ohm, second resistor 10 ohm, third is 30 ohm, and source voltage is 12 volt. So I is equal to I1 plus I2 plus I3, and I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is V by R3. It is equal to V by R2, 12 divided by 10 ohm, that is 1.2 ampere, and I3 is equal to V divided by R3,
is equal to 12 divided by 30. That is 0.4 ampere. The total current will be now 2.4 plus 1.2 plus 0.4 ampere is equal to 4.0 ampere. One by Rp is equal to 1 by 5 ohm plus 1 by 10 ohm plus 1 by 30 ohm. Now it is will be equal to 5 plus 6 plus 3 plus 1. 10 divided by 30. 2 by 3 into 2. Which is equal to 3 ohm. Electric power. What is electric power? It is rate of consumption of energy or rate of doing of work is called power. Electric energy of battery used in moving a charge Q from one terminal to other terminal of circuit where voltage V is applied is VQ. So the power P is equal to energy divided by time, VQ divided by T, or P is equal to VI, or P is equal to I square R is equal to V square divided by R. SI unit of power is watt. That is 1 watt is power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Here 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere is equal to 1 volt ampere. So power is also termed in 1 volt ampere. So this is electric energy, there will be voltage. So P is equal to VQ divided by T, P is equal to VI, also P is equal to I square R. So P is equal to IR, so P is equal to I square R. These are you can say the foundation of power, electrical power, these equations. So you must memorize these equations. It will be very useful in solving numerical of all nature. Commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. जिसको एक यूनिट भी बोलते हैं. जैसे आपने घर में सुना होगा कि इतनी यूनिट बिल आया, तो ये जो 1 यूनिट है, इट इज़ एक्चुअली 1 किलोवाट आवर. 10 वॉट का मान लो आपके पास बल्ब है और वो 100 आवर तक कंटिन्यूसली ऑन करके रखते हैं, तो इट विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ पावर. यहाँ पर आपको कोई गलती दिखाई दे रही है? अगर दे रही है तो आप प्लीज़ कमेंट इट. An electric bulb is connected to a 220 volt supply. That is generator, 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is
the power and heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होती है by a source, then a part of energy is used in doing useful work like rotating a fan, running a treadmill engine, and a part of energy wasted in form of heating due to the resistance of the circuit. As you know, the formula of the electric power, P is equal to Vp divided by T, or P is equal to Vi, because Q by T is termed as current I, or P is equal to I square R, or H by T, that is the heat energy divided by T is equal to I square R. So finally we come to H is equal to I square R. T. This is known as Joule's law of heating. It implies that heat produced in circuit is directly proportional to the square of the current for a given resistance, directly proportional to the resistance of a given current, and directly proportional to the time for which the 840 watt is equal to 220 volt and I. So I is equal to 840 divided by 220 watt.